बहुत सारी फिल्में जो बनाना चाहता था आज नहीं बना सकता। 98 के बाद वो आया अनुराग कश्यप नेटवर्क। मैंने कहा कहाँ है ये पैसे? ये मेरे पैसे कौन ले गया मुझसे? We'll feel very out of place if they don't boycott us. हाँ, How what is हमको this भी यार? थोड़ा- हमें भी हमको करना है, boycott नहीं होना हमें भी हमें भी बॉयकॉट होना है। You also want to be boycotted? हमें भी बॉयकॉट हमें भी होना होना है। है। ऐसे आमिर खान बॉयकॉट होता है। I also want to trend on Twitter boycott Kashyap. What about this nepotism block? I'm the most nepotistic filmmaker in the country. What is nepotism? वो लाइट होगी उसमें दिखेगा। मैं क्यों एक्टिंग कर मैं रही अगली हूँ? पिक्चर का नाम ही बल्ब रख रहा हूँ। What will the prequel to Dobaara be called? कभी प्लीज गंदा कश्यप टाइप जोक मत प्लीज He's so प्लीज। happy. Prequel to दोबारा is पहली बार। Anurag Kashyap and Taapsee Pannu are coming together again. That is Dobaara. Hello and welcome. Thank Hi. you. Have people said this already? What? ये तो That हम you're ही ने coming बोला। together Dobaara. ये तो हमने ही बोल दिया था यार जिस दिन पिक्चर अनाउंस करी थी। So I'm saying it Dobaara. अच्छा सेट दोबारा। Okay. No, that's too many layers. But that's an Anurag Yeah. Kashyap film for you. So it's 2:12. I mean, Dobaara, to someone like me, I thought it was again, but it's also 2:12. Yeah. The runtime is also 2:12. Yeah. Trailer is also 2:12. How many more 2:12s have you added? बहुत सारे 212s हैं। हाँ. एक अलग कॉन्टेस्ट करेंगे पिक्चर एक के बाद। अलग How many contest है। 212s Yeah. can you spot in the film? Yeah, You know बहुत this सारे। thing, people say 11:11 make a wish. So what is the significance of 2:12? 212 का सिग्निफिकेंस तो वो दो पिक्चर देख के रहेंगे बाद ही पता लगेगा कि 212 का सिग्निफिकेंस ढूंढने में तो सारी फिल्म है। Actually. Okay. I think I know what it is, but I won't say. I think that's when the glitch in the space-time continuum happens. Yeah, I love it when people have their Their own theories. Yeah. Yeah. एंड That's स्पेस also टाइम fun. कंटिन्यूम कितने लोगों को समझ में आता है? You say it in Hindi. What is space-time continuum in Hindi? पता नहीं। You made a Hindi film, no? What is Yeah. it? It's a sci-fi thriller in Hindi. साइ-फाई थ्रिलर इन I हिंदी। said- नहीं I स्पेस looked टाइम it up. कंटिन्यूम कितने लोगों को समझ में आता है? उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है। So ये है। है? मैं वो बोलूं? वो अपनी रिसर्च करके आई है आप में हाँ. से। क्या? काल, अंतराल, सातत्य. काल अंतराल सातत्य। चलो अब हम अगले क्या इंटरव्यू में बात चेप है। देंगे। हाँ. काल अंतराल सातत्य क्या बात है? There you go. उफ, चलो Okay, your film. एकदम इवॉल्व साउंड करना है। अगले अच्छे से याद कर लो अगले इंटरव्यू में। काल अंतराल सातत्य। हाँ। What is a time portal? You go through a time portal. What is a time portal in Hindi? टाइम पोर्टल इन हिंदी। यार हमको तो जब से मालूम तब से वो पोर्टल था। नो स्मोकिंग में भी उसका बाटअप पोर्टल ही था वो। Which portal? उस समय किसी को पोर्टल समझ में नहीं आता था। अभी सबको Okay, पोर्टल आज समझ के में आता है। हाँ अब अब लोगों सबको ने समझ में काफी आता है कुछ पोर्टल। OTT पे देख लिया तो उनको समझ में आ गया पोर्टल क्या होता है। Portal, yeah. It's a द्वार. द्वार पोर्टल इज अ दरवाजा। Yes. पोर्टल इज अ दरवाजा। I love how I'm teaching Hindi to Taapsee and Anurag. Me. नहीं पोर्टल इज अ दरवाजा। इट्स अ डोरवे टू एनीथिंग। Yeah. दरवाजा। So it's द्वार. Okay. What is time travel? This is very easy. समय का मतलब ट्रैवल को क्या बोलेंगे? सफर। समय का सफर। That .com for travel. टाइम ट्रैवल। That .com यात्रा. Oh. समय यात्रा. ये देखिए नहीं। इसका अजीब सा डम्शी राइट चल हाँ, रहा है इसका yeah. अजीब नहीं, सा। No, but you only brought it as a space-time नहीं नहीं continuum. समय टाइम ट्रैवल यात्रा। तो होता है। टाइम ट्रैवल वो है मतलब टाइम ट्रैवल मतलब जैसे कि हमारे साथ चल रहा है समय। हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। So what I've understood from this is a urban film. It is a sci-fi film which is going to use all these portal, space-time continuum, all of that, and not Yeah. what I said that word, that phrase. नहीं समय ये यात्रा। फिल्म एक्चुअली क्या मेरी फैंटेसी फिल्म है। हाँ. ये फिल्म जो है ना अंदर में मेरे अंदर बहुत सारी फैंटेसीज हैं कि मैं पास्ट में जाके पास्ट बदल दूं ताकि प्रेजेंट बदल We don't जाए। believe those are your fantasies. मैं चाहता हूँ अरे नहीं सच्ची फैंटेसी है। okay. मैं चाहता हूँ कि मैं पास्ट में जाके पास्ट बदल दूं ताकि प्रेजेंट बदल जाए इन्होंने हमारा। लाइफ में हाँ, इतनी गलतियां butterfly करी हैं effect. तो हाँ. उनको वापस जाने का बहुत वही मन है। है मेरा बहुत मन है टाइम में वापस जाने का ताकि मैं कुछ बदल सकूं Yeah, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बदलना मुश्किल है। I love the butterfly effect, and I love it every time it's explored on screen. So was that also your attraction to this? Attraction to the whole script was the butterfly effect. The butterfly effect, right? It's nice every time it's explored. Taapsee, I know because I've read. I was wondering how come you agreed to do a remake, but it was you who tempted him. You called him and asked for a director. But did you actually want him to only do it? I knew he wouldn't do it. Oh. So Yeah, I don't do remake. Did you think maybe? no, I actually had no. I was sure he will not do it. तो मैं तो इनसे इसलिए पूछ रही थी because whenever there's a talk about a new talent in terms of directors, writers, or even actors, they for some reason all go to him or he knows all of them. Yeah. So He's an incubator. yeah, so that's why for me मेरा go to होता है if I want to know someone who's upcoming who's not been explored too much.
who's not become a star as yet suddenly and become inaccessible. So I go to him and was like, आपको पता है कोई जो direct करेगा, who's really good. So then I sent him the script because when I got it also, it was in the form of script. The film didn't release, and it was a very difficult read to read it because it was quite like मतलब पढ़ने के लिए भी बहुत दिमाग की ज़रूरत थी उसके, काफ़ी टाइम लगा वो समझने में. Then I sent it to him and then he read it and he was like, it's so beautiful, I would want to do it myself. So it was quite a jackpot moment. It really, because your first remake, that was sci-fi thriller. Why? Because you've done thrillers and other because genres. I can never imagine a film like this, no. और script मिली बैठे बैठाए. हाँ. Correct. But you don't like that. You like doing manner. You like the hardest way, not the shortcut. हाँ, but मैं नहीं सोच सकता ऐसे. Okay. See, my thing is like when something is thrown at you and it's like a challenge, और मैं ऐसे सोच नहीं सकता हूँ. तो मैं उस फिल्म में घुसने के बाद तो मेरे को वो यूनिवर्स समझ में आने लगा. I wanted to also take a risk. I wanted to step out also because my blocks, I have lots of blocks. हाँ. रीमेक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना. उसके अलावा साइफाई से भी डर लगता था. So I need to. It's like if I wouldn't have removed my blocks, I would not have been a deep sea diver. I was scared of water. But my fear of water went away after I became a deep sea diver. Oh, you're talking literally. Okay. Yeah. Literally. Okay. So in life, metaphorically. अच्छा. It's a deep इतना film. This अनुराग कश्यप इतना भी गहरी बातें नहीं करता है. मैं बहुत ही He is very shallow. बहुत shallow आदमी हूँ मैं बहुत shallow आदमी हूँ. तो वैसा ही है. तो मेरे लिए था कि जिन जिन चीजों का डर था वो सब इस एक फिल्म में था. हाँ. So your मैं कर दिया. sci-fi, Taapsee. Sci-fi, time travel. तापसी से तो भी डरता हूँ. Remake, everything. Everything that I have blocks. It went away with this film. Now I'm open. I'm much more relaxed and open, and because the result that has come out is so beautiful that I feel like satisfied as a filmmaker. Yeah. And as a person, I'm like, क्या फालतू के ब्लॉग्स लेके दिमाग में घूम रहा हूँ मैं. Yeah. वो भी है. और दूसरा ये भी खुल गया. बहुत सारी फिल्में जो बनाना चाहता था आज नहीं बना सकता क्योंकि समय ऐसा नहीं है. मेन बात वही है जो इनके ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं वो बना नहीं सकते इस टाइम पे, इसलिए बेटर है कि यही बना लें. No, but even this you didn't make very easily. No, it was, see, the thing is this film, एक तो सब्जेक्ट ऐसा है ना, इसमें जितनी तुम लेयर ऐड कर सकते हो तुम कर सकते हो. ये फ्रीडम, ये ऐसा जोन है इसके अंदर. ही एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ एंड आई पर्सनली, मैंने 2 पिक्चर में जो उनके साथ काम किया है वो किसी और की स्क्रिप्ट थी. मनमर्जियां कनिका की थी, ये ओरियोल की है. बट आई थिंक उनका पर्सपेक्टिव अलग है और इनका थोड़ा अलग है. बट जब ये जो मिक्स होते हैं ना तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज क्रिएट होती है. सो फॉर सम रीजन आई पर्सनली फील एंड लॉट ऑफ हिज फैंस माइट डिफर कि व्हेन अ स्क्रिप्ट फ्रॉम आउटसाइड कम्स टू हिम, वो जो लेयर अपनी इसके ऊपर डालते हैं, दैट रियली मेक्स अ ब्यूटीफुल output, I feel. You is saying only good for तड़का, I feel. नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं जो ये बोल रही है. इंडिया के बाहर उनको चाहिए कि मैं अपनी खुद की लिखी हुई फिल्म बनाऊं. नहीं, मैं इनको ये बोलती हूँ, मैं भी अगली पिक्चर में जो हम करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको कौन सी हम करेंगे. आप हमने शर्त लगा रखी है, अगर मैं वो जीत गई शर्त इनको वही पिक्चर करनी पड़ेगी जो मैं लेके आऊंगी. What is it? Going to be a commercial Telugu film remake? है? नहीं वो नहीं, इसको इतना भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगी. इसको मालूम है इतना भी ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेगी. नहीं, वो ऐसी चीज जो मुझे पता है कि और काफी लोग मेरा रीमेक्स का डर चला गया अभी. हाँ, तो now I see it like that. नहीं, now I see it like I see it differently. I think like how Spike Lee made an old boy. Yeah. Or Departed was made by Scorsese. You know, people I admire make remakes. So मेरा भी ये रीमेक का डर चला गया है. My thing is remake is because it is not about somebody thinking I don't have an idea left. You know, हम लोग रीमेक्स की डर से नहीं बनाते हैं कि सामने वाले को लगा इसका बचा ही नहीं आइडिया, ये रीमेक बनाने लग गया. ऐसा नहीं है. रीमेक इज बिकॉज यू थिंक दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एनफ टू बी टोल्ड टू पीपल who don't know that language. Yeah. Or who doesn't reach out to. Yeah, I feel like so I'm borrowing that story and I'm telling that story to my people to say this is an interesting story to hear. It's a very Kashyap-esque. It's a very Kashyap-esque film from my trailer. From the trailer, I can see that. नहीं, इसमें गरीब वर्ल्ड नहीं है. मैं पहले बता दूं, और लाइट है इस पिक्चर के अंदर. I have a major problem with this film showing only गरीब world. And with मतलब ऐसी लाइट है ऑडियंस को टॉर्च लेके जाना पड़े थिएटर में देखने के लिए. They are rooted. That's why you say, ना, they are rooted. They're rooted मतलब घर में मैं 2 तरह की फिल्म बनाता हूँ. फिल्मों के अंदर एक मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ, एक तापसी टाइप की फिल्म बनाता हूँ. 2 तरह की. तो वो हम ऑल्टरनेट करते हैं. मनमर्जियां के बाद इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसके अंदर नाली के अंदर पैसे अटक गए थे. उसके बाद इन्होंने ये बनाई जिसके अंदर लाइट है, जिसके अंदर आपको मतलब अगली फिल्म में नाली में आदमी अटका होगा. उसके बाद इन्होंने अपना कुछ वो डार्क फिल्म का
क्रेविंग पूरी कर लिया, तो मैंने कहा जब मेरे साथ पिक्चर होएगी वो लाइट होएगी, उसमें दिखेगा, मैं क्यों एक्टिंग कर रही अगली हूँ. पिक्चर का नाम ही बल्ब रख रहा हूँ. So, you know, we were talking about the films that the scripts you have, you can't make in this milieu. But even this film, which is as a sci-fi thriller, nothing to do with this milieu or anything, this was also not easy to make for the two of you. There were many roadblocks. It was not easy in terms of creatively making No, this it was film not and bringing it easy together. in terms of IT raids being and stopping the film. IT रोड हाँ बीच में शूटिंग के बीच में 3 दिन वही। एक्स्ट्रा IT रोड्स में गया. हाँ, तीन दिन का एक्सपेंस हमारा ऐड हो गया इसके अंदर, Yeah. बैठे रहने का रूम पे. So, who are you going to put that expense on? वो तो प्रोड्यूसर जवाब देंगे, वो तो Okay. वो जवाब तो प्रोड्यूसर देंगे. हाँ. मेरे ऊपर नहीं है वो एक्सपेंस, मेरे ऊपर तो अलग ही है. इनको ऐसा, लोगों को ऐसा भूलेखा जो है जिनके पास बहुत सारा पैसा है. हाँ लोगों को लगता है पता नहीं क्या है हमें तो. That time, IT Raid was a good PR, I think, for you. yeah. For some reason, people That thought you have picture money. went viral with not the two just of you, that. I feel. मतलब जब आप गूगल पे जाके देखो और देखो कि नेट वर्थ क्या है, IT रेट के बाद वो आया अनुराग कश्यप नेट वर्थ. हाँ. तो मैं कहा कहाँ ये पैसे, ये मेरे पैसे कौन ले गया मुझसे, ये पैसे मुझे दे दो, कोई मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे फिर कोई सुनील क्षेत्रपाल और एकता कपूर नहीं चाहिए, ये जो पैसे जो मेरे इंटरनेट पे लिखे मेरे पास है तो वही आ जाए बस. काफी टाइम के बाद इनका जो पॉजिटिव PR हुआ है वो IT Raid ने किया है, जो लोगों को ऐसा लगना शुरू हो गया कि अनुराग कश्यप के पास पैसा है. Yeah. हाँ मैं तब से थोड़ा हाँ. एटीट्यूड आ गया मेरा. But the thing with combining with somebody who's ideologically the same is that A, it's a lot of fun, but B, when the two of you are not aligned with the popular ideology, then it can also be dangerous for the two of you. नहीं हम तो आग से खेलते खेलते यहाँ तक आ गए. हाँ हम बहुत बार जल चुके हैं. हाँ. We like to walk on the edge. अब क्या करें, कभी इधर गिर जाते कभी उधर. So, सब कुछ नहीं करते. you've removed so many blocks now, Anurag. What about this nepotism block? Will you ever work I am the with most just a nepotistic star- filmmaker in the Oh, country. how? Oh, yeah, actually, yeah, that's I am the most Only- nepotistic filmmaker in the country. What is nepotism? Huh, Bollywood मतलब people. भले Yeah, you know. okay fine, my daughter is not there in the film, but nepotism is I will not not only hire relative. somebody I don't know. But it's more like campy. That's more like camp. Anurag Kashyap camp. It's not a camp. It's favoritism, not na? camp. It's Nepotism is favoritism. It's not also even nepotism. favoritism. I need to know my people because I trust them. I work with a lot of trust. So when I trust someone, it has to be fully there. And I trust people that I hire. And who do you trust the most in your time? Actually, anybody. You will trust family, right? So for me, my set is like my family. And वो है और एक के थ्रू दूसरा आता है. हाँ, वो nepotism ही है. If my first aid is leaving, हाँ, and because they're growing to become a filmmaker, हाँ. I don't know who is a good first AD in the market. Yeah. So that first AD will give me another first AD before they leave. Okay. So what do you call that? That's nepotism, That's no? nepotism. Yeah, Correct. nepotism. Yeah. So if my I art agree. director is leaving, You are fighting my for production the title. designer will find me another production designer when they. That's the Don't have time. Anurag Kashyap Whisper Network. You know, it's like Yeah. a Yeah. bunch of talented individuals. What about you, Taapsee? You will ever, I don't know, do a Taapsee film is with a super non-actor. nepotistic. Taapsee has been trying to launch her sister with KRK for so long. She's been trying to launch Shagun Pannu with KRK. Shagun with भैया KRK के पास dates भी दे के रखा हुआ है, बैठा हुआ वेट कर रहा है. Kiyank has left you guys alone. Why are you you doing No, this? KRK wants to do a film with Shagun. No. She wants to launch him with KRK because she knows she'll make a lot of money in Dubai. शगुन is very scared. शगुन दुबई जाना बंद कर दिया. शगुन से न्यूज़ पता चली है. Guys, yeah. But okay, now this is a film of outsiders. You think people are not going to boycott this film because every film Yeah, now, we will feel very people out of want to place. boycott. Yeah, we will feel very out of place if they don't boycott us. हाँ, How what is हमको this भी यार? थोड़ा- हमें हमको भी भी करना है. boycott नहीं होना हमें भी हमें भी boycott होना है. You also want to be boycotted? हमें भी Okay. boycott हमें भी होना होना है. है. Okay. या सिर्फ आमिर खान boycott होना है. I also want to trend on Twitter boycott Kashyap. हमें भी boycott होना है. Okay, then I hope that happens so that this Thank film you. becomes a huge hit. Thank But wait, what will the prequel to Dobaara be called? What अभी will अभी प्लीज गंदा कश्यप टाइप जोक मत मारना. Please, He's please. so happy. I know because ये एकदम गंदे टॉक्सिक जोक्स यार. He's not toxic. That's so mean. Yeah, what is prequel to Dobaara? Prequel to Dobaara is पहली बार. And the sequel to Dobaara will I'm be? not gonna promote. I'm not gonna promote such jokes by laughing in ये them. गलियां ये चौबारा मतलब 4 बार. यहाँ I'm not आना gonna ना laugh. दोबारा. I'm not gonna laugh That's on these jokes. amazing. That's what I was thinking. Anurag, same wavelength, same frequency. Yes.
Same frequency. प्लीज ऐसे जोक से मत जाइएगा. इस पिक्चर के अंदर इस शैलो लेवल का दिमाग नहीं यूज किया गया है. इसमें बहुत ज्यादा दिमाग यूज किया गया है. एक्चुअली ये फिल्म जब बनाते समय सिर्फ भेजा करता था मैं तापसी का, तो ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा दिमाग है. बहुत दिमाग की जरूरत पड़ेगी पिक्चर देखने के लिए. Yeah, guys. you know, and I just showed Taapsee this, and I'll show it to you also, Anurag, and I show it on camera. I'll see. This is a don't leave your brains at home film. You'll need them at 3:30. I wrote. She just said. हाँ तो मतलब ये तो ऑब्वियसली मतलब इट विल टेक लॉट ऑफ. अब ऐसा नहीं है कि आप बीच में मतलब लू ब्रेक पे जा रहे हो, मतलब सिगरेट ब्रेक पे जा रहे हो, ऐसे समझ में नहीं आएगी ये पिक्चर. तो मैं पहले इस फिल्म में आप सुसु करने नहीं उठ सकते. इंटरवल में चले जाना. दैट्स हाउ वी हैव इंटरवल्स इन हिंदी फिल्म्स. तो ये वो वाली पिक्चर जिसमें आपको एक्चुअली में दिमाग लेके जाना पड़ेगा. Okay, so take your brains and go and watch it. Dobaara. It's actually the same guy who wrote बदला, right? So Yeah. उसके अंदर काफी दिमाग लगा था. इसमें थोड़ा सा उससे भी ज्यादा लगेगा. All right, I believe you. Now you. नहीं मजा आएगा. हाँ. Entertaining. So you can't just watch it once. You'll have to watch it one more time to understand. Might शायद समझ ना आए 100%. पहली बार. Yeah, it's a test. नहीं that you दूसरी will बार get. नहीं, पहली बार में समझ में आएगी, दूसरी बार में ज्यादा मजा आएगा. Then you'll get everything. Yeah. Then we get all the layers. Then Then we'll all all the discuss the theories, and then we'll do a post-film analysis. Thank you to the two of you, sweetly you. answering all my questions. Thank Pannu. you.